Welcome to all students. Myself, O.P. Vadara, Assistant Professor of Physiology, Department, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Today, we discuss about our topic different photosynthesis mechanism. फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म पहले फोटोसिंथेसिस में जो आपका मैकेनिज्म है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है तो मेनली फोटो सिस्टम्स है उसके अंदर टू पिगमेंट सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं द डिस्कवरी ऑफ रेड ड्रॉप एंड द इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट लेड द साइंटिस्ट सजेस्ट द फोटोसिंथेसिस इज ड्राइवन बाय टू फोटोकेमिकल प्रोसेस. These processes are associated with two group of photosynthetic pigments called as pigment system first and pigment system second. Wavelength of lighter so than 680 nanometers affect both the pigment systems, while wavelength longer than 680 nanometers affect only pigment systems first. Mainly जो light है wavelength है वो mainly 680 nanometers है वो mainly pigment system first और second दोनों को affect करती है but only greater than 680 nanometers only pigment system first है उसको affect करती है. In green plants, pigment system first contain chlorophyll A, B, and carotenes. In this pigment systems, a very small amount of chlorophyll A absorbs light at 700 nanometers, known as P700. However, constitutes the reaction center of photosystems first. The pigment system second contains chlorophyll B and some forms of chlorophyll A such as chlorophyll A 662, chlorophyll A 677, and chlorophyll A 679, and xanthophylls. A very small amount of special form of chlorophyll called P680 constitutes the reaction center of pigment system seconds. Carotenoids are present in both the pigment systems. Mainly जो carotenoids है उसका जो presence है वो both जो pigment system first and second है उनका तो mainly होता है. The two pigment systems first and second are interconnected by a protein complex called cytochrome P6F complex. तो इस प्रकार pigment system first और second है उनकी जो connectivity है वो mainly कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से जिसके द्वारा होती है और जिसको अपन साइटोक्रोम P6F कॉम्प्लेक्स के रूप में जान सकते हैं. द अदर इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स as like आपका प्लास्टोक्विनोन्स and plastocyanins act as mobile electron carrier between the complex and either of the two pigment systems. The light energy absorbed by other pigments is ultimately trapped by P700 and P680 pigment system 700 and pigment systems 680 forms of chlorophyll A, which alone take part in further photochemical reactions. Pigment system first complex consists of 200 chlorophylls, 15 carotenoids, and molecules of chlorophyll A absorbing light at 700 nanometers. And this constitutes the reaction center of photosystem first. Pigment system seconds complex consists of 200 chlorophylls, 500 carotenoids, and a mole of chlorophylls absorbing light at 600 nanometers called pigment system 680 at the center. This constitutes the reaction center of pigment system seconds, mainly photosynthetic unit, the quantasomes. Emerson and Arnold, 1932, showed that about 2,500 chlorophyll molecules are required, fixing one molecule of CO2 in photosynthesis. This number of chlorophyll molecules was called the chlorophyll unit, but name was subsequently changed to photosynthetic unit. However, since the reductions or fixations of one CO2 molecule require about 10 quanta of lights, it is assured that 10 flashes of light are required to yield one or two molecules or reductions of one molecules of CO2. Thus, each individual unit would contain say 1/10 part of 2,500, example 250 molecules. Action spectrum: the pigment present in the plants or any living organism have the ability to absorb radiant energy to carry out photophysiological reactions.
It is difficult to decide which specific pigment is actually associated with the particular photochemical reactions. Hence, common procedures to identify the pigments involved in a particular photo reactions is to determine the action spectrum exam measuring the rate of particular photo reactions. When the action spectrum for a photo physiological is determined, the next step is to compare this action spectrums with absorption spectrum of pigments. Two pigments A and B were isolated from the same plants and their absorption spectra were determined. Pigment A has a peak in absorptions at 395 nanometers and पिगमेंट जो सिस्टम्स भी है उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो मेनली डिफरेंट पाई जाती है। तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड है उस पर मेनली डिपेंडेंट रहती है कि जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है उसका जो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और उनकी जो कनेक्टिविटी है वो किस प्रकार होती है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो मेनली किस तरीके से होता है। तो आपस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम है यानी मॉलिक्यूल्स जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है पिगमेंट सिस्टम सेकंड है उनका फॉर्मेशन है और किस लाइट पे मेनली जो उनकी एक्टिविटी है वो पाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग मेनली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो अफेक्ट करती है। तो इस प्रकार मेनली जो सनलाइट है उसका जो मेनली ट्रांसफर है मेनली फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड जिसको फोटो सिस्टम फर्स्ट का अपन भी 700 के रूप में भी जान सकते हैं। तो इसके अलावा जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है वो 30680। इस प्रकार जो मेनली इनका जो एक्टिवेशन से जो लाइट्स है वो मेनली डिफरेंस पाई जाती है और जो फोटोसिंथेसिस है वो मेनली कंप्लीट होता है। मेनली जो एनर्जी है ट्रांसफर है उसका जो ट्रांसफर है वो किस तरीके से होता है, तो मेनली जो एनर्जी ट्रांसफर है वो मेनली एक साइक्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट फॉस्फोरेशन के द्वारा होता है। साइक्लिक जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर मेनली जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो ट्रांसफर है वो डिफरेंट से जो पिगमेंट्स है उनके द्वारा होता है। फर्स्टली जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है उसको जब लाइट मिलती है तो वो मेनली एक वन इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाता है और इसका जो ट्रांसफर है वो एफ आर एस से मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्ब करके आता है और फिर रिडक्शन से जो पिगमेंट्स है वहाँ मेनली इसका जो ट्रांसफर होता है। फेरिडोसिन से मेनली जो साइटोक्रोम बी है वहाँ मेनली जो इलेक्ट्रॉन से रिमूव होने के बाद में साइटोक्रोम B6 से एक्टिव कंडीशन में आता है और यहाँ मेनली जो एडीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन करती है और फिर जो ये इलेक्ट्रॉन है उसका जो ट्रांसफर है साइटोक्रोम एफ के अंदर होता है और साइटोक्रोम एफ फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करके प्लास्टोसाइनिन्स को मेनली इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड कंडीशन से होती है। प्लास्टोसाइनिन से मेनली जो मूवमेंट्स है वो वापस भी 700 जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से वहाँ हो जाता है बट इन लाइट के अंदर जो P160 जो पिगमेंट सिस्टम से वो 7 से होता है वो 680 नैनोमीटर्स के अंदर मेनली जो लाइट रिएक्शन से एब्जॉर्ब करता है उसकी कंडीशन से मेनली वन इलेक्ट्रॉन से रिमूव करता है और ये मेनली क्वांटम है उसको मेनली जो इलेक्ट्रॉन से मूव करता है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मूवमेंट है वो साइटोक्रोम बी को होता है। साइटोक्रोम बी से मेनली जो प्लास्टोक्विनोन्स है वो मेनली इसको एब्जॉर्ब करता है। प्लास्टोक्विनोन्स है वहाँ मेनली एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर मेनली एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो साइटोक्रोम्स एफ से होते हुए प्लास्टोसाइनिन्स का होता है और लास्ट के अंदर मेनली जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है वहाँ मेनली जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट होता है। The electron released from photosystem first goes through a series of coenzymes and return back to the same photosystem first. This electron transport is called cyclic electron transports. The synthesis of ATP occurring in cyclic electron transport is called cyclic photophosphorylations. The cyclic electron transports involve only pigment system first. This situation is created when the activity of pigment system second is blocked. Under these conditions, only pigment system first remain active and photolysis of water does not take place. तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है मतलब लाइट की उपस्थिति के अंदर जो वाटर है उसका जो अपकेटेंस है लाइसिस है वो नहीं होता। ब्लॉकेज ऑफ नॉन साइक्लिक एटीपी फॉर्मेशंस एंड दिस causes a drop in CO2 assimilations in dark reaction. There is a consequent shortage of oxidized NADP. Thus, when P700 molecule is excited in pigment system first, by absorbing a photonic quantums of light, the ejected electrons is captured by
peroxines via FRS. From peroxine, the electrons are not used for reducing NADP to NADPH. But ultimately, it falls back and to the free 700 molecules via number of other intermediate electron carriers. The electron carriers are polyably cytochrome B6 and cytochrome 6 and plastocyanin. During this electron transport, photophosphorylations of ADP molecules to form ATP molecules take place at two places between ferredoxins and cytochrome B6 and between cytochrome B6 and cytochrome F. Thus, two ATP molecules are produced in this cycle since the electron ejected from free 700 molecules is cycled back. The process has been called as cyclic electron transports. And the accompanying phosphorylations is the cyclic photophosphorylations. Mainly, it involved different prime receptors, cytochrome B6 and cytochrome F mainly. Procedure in this mainly involves different criteria. So significance of cyclic photophosphorylations है उसका significance क्या है तो mainly during cyclic electron transport and phosphorylations photolysis of water autolysis and reaction of NADP do not take place. The electron returns or cycles back to original positions in P700 from the chlorophylls. Here, chlorophyll molecules serve both as a donor and the set of electrons. It generates energy-rich ATP molecules at two sites and as such cannot drive dark reactions of photosynthesis. On the other hand, non-cyclic photophosphorylations does not produce a sufficient ATP in relations to NADPS to operate the dark phase of photosynthesis. Therefore, the deficiency of ATP molecules in non-cyclic photophosphorylations is made up by the operations of cyclic photophosphorylations. Secondly, the cyclic photophosphorylations may be an important process in providing ATP for photosynthesis and other processes such as synthesis of starch, protein, lipids, nucleic acids, and pigments within the chloroplast. Non-cyclic photosynthesis, the electron released from photosystem seconds grows through a series of enzymes and coenzymes or to photosystem first. This is called non-cyclic electron transports, and the synthesis of ATP in non-cyclic electron transport is called non-cyclic photophosphorylations. The main functions of non-cyclic electron transports is to produce the asymmetry bouts such as NADPS2 and ATP, and the process occur in photosystem first and second. This process of electron transport is initiated by the evolution of photons quantums of light by P680 from of chlorophylls molecules in the pigment system seconds, which gets excited and electrons ejected from is so that the electron deficiency or hole is left behind in the P680 molecules. The ejected electron is trapped by unknown compounds known as Q. From Q, the electron passes downhill along a series of compounds or intermediate electron carriers, such as cytochrome B6, plastoquinone, cytochrome F, and copper-containing plastocyanin, and ultimately received by pigment system first. At one place during the electron transport between plastoquinones and cytochromes F, one molecules of ATP is formed and from ATP and inorganic phosphates. Now, when a photon of light is absorbed P700 from chlorophyll molecules in the pigment system first, is this gets excited and electron is ejected from it. The ejected electron is trapped by FRS paradoxins reducing substance and it is then transferred to a known heme iron protein called paradoxins. From paradoxins, electron is transferred to NADP so that NADP is reduced to NADPS plus H plus. The hole in pigment system first has been filled by electron coming from pigment system first second. But the hole or an electron deficiency in pigment system second is filled by the electron coming from photolysis of water, where water acts as electron donor. In these schemes of electron transports, the electron ejected from the pigment system seconds did not return to its place of origins. Instead, it is taken up by the pigment system first. Similarly, the electron ejected from pigment system first, I did not cycle back and was consumed in reading NADP. Therefore, this electron transport has been called as non-cyclic electron transports and accompanying phosphorylations.
as non-cyclic phosphorylations. The non-cyclic electron transports phosphorylation take the shape of Z, and hence it is called the name Z schemes. Non-cyclic phosphorylations and autoevaluations are inhibited by CMU 3,4 chlorophyll, first 1 dimethylsuria, and 3,4 dichlorophenil 1 dimethylsuria, DCMU and CMU. Significance of non-cyclic electron transports: it involves pigment system first and seconds. The electron expelled from free 680 to pigment system second is transferred to pigment system first, and hence it is non-cyclic electron transport. In non-cyclic electron transport, photolysis of water, Hill reactions, and evolutions take place. Phosphorylation synthesis of ATP molecules take place at only one place. The electron released during photolysis of water is transferred to pigment system second. The hydrogens ion released from waters are accepted by NADP and it becomes NADPS2. At the end of non-cyclic electron transports, energy-rich ATP asymmetry powers NADPS2 and oxygens from photolysis of water are observed. The ATP and NADPS2 are essential for the dark reactions where reductions of CO2 to carbohydrate take place. Comparisons between non-cyclic and cyclic electron transports in chloroplast, mainly जो cyclic और non-cyclic जो electron transports है उसके बीच का mainly क्या difference पाया जाता है. Cyclic transports or photophosphorylations and non-cyclic transports or photophosphorylations associated with pigment system first, but non-cyclic electron transport associated with pigment system first and second. The electron expelled from chlorophyll's molecules is cyclic back, and the electron in non-cyclic electron transport, the electron expelled from chlorophyll's molecule is not cycles back, but its loss is compensated by electron coming from photolysis of water. In cyclic electron transports, photolysis of water and evolutions of O2 do not take place. But in non-cyclic electron transports, photolysis of water and evolution of O2 take place. In cyclic electron transports, phosphorylation take place at two places, but in non-cyclic electron transport, mainly phosphorylation take place at only one place. Cyclic electron transports in which NADP is not reduced, and in non-cyclic electron transports, NADP is reduced to NADPH plus S plus. Significance of light reactions. Light reactions का mainly जो significance है क्या है? Light reactions take place in chlorophylls in the presence of light. During light reaction, the asymmetry power ATP and NADPH2 are synthesized. The asymmetry power are used in dark reactions for the conversion of CO2 into sugars. Photolysis of water occur in light reactions. The hydrogen ion released from water are used for the synthesis of NADPH2. Plants release O2 during light reactions. सो मेन जो लाइट रिएक्शंस है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो मेनली जो एसिमेट्री पावर है उसको प्रोड्यूस करने के लिए होता है, और ये जो एसिमेट्री पावर है वो मेनली डार्क रिएक्शंस के अंदर CO2 है उसको मेनली कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्जन करने के लिए नेसेसरी है, और इसके अंदर जो मेनली प्लांट है वो O2 लाइट रिएक्शन के दौरान O2 है वो रिलीज करता है. रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट है, मेनली रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट है. इसके अंदर मेनली रॉबर्ट इमर्सन नोटिस ए शार्प डिक्रीज इन quantum yield at wavelength greater than 680 nanometers while determining the quantum yield of photosynthesis in chlorella. तो मेनली जो इमर्सन है साइंटिस्ट उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि जो इमर्सन इफेक्ट है इसके अंदर अगर कोई भी जो प्लांट है अगर उसको 618 नैनोमीटर से ग्रेटर अगर होगी वेवलेंथ है लाइट है अगर उसको अपन एक्सपोज करते हैं तो उस कंडीशन से मेनली जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो डिक्रीज हो जाती है. बट अगर बिलो 680 जो नैनोमीटर जो लाइट से अगर इस फोटोसिंथेटिक जो मेनली प्लांट है उसको एक्सपोज किया जाए तो उसकी जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो इंक्रीज होती है. अगर टू वेवलेंथ है उनको अगर सेपरेट कंडीशंस में प्लांट को एक्सपोज किया जाता है तो उस कंडीशन में मेनली जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो रिड्यूस होती है मेनली. इसके अलावा अगर कोई भी जो टू फोटोसिंथेटिक अगर लाइट्स है उसको अगर एक साथ दिया जाए टुगेदर दिया जाए तो उस कंडीशन में मेनली जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसको मेनली इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट्स बोलते हैं.
तो इस प्रकार मेनली जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो मेनली मैकेनिज्म है वो टू टाइप से होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।